कैटेगोरिकल एंड ऑर्डिनल फीचर्स, इसको हम कोई नोट नहीं बना सकते नोट्स, क्योंकि अब पता क्या होगा, ये बाद में जब आएगी ना, इसकी चैलेंजेस आएंगे ना जो, तो उसके अंदर फिर हमें इसकी तरफ दोबारा से रेफर करना पड़ेगा, हमें कुछ थोड़ा सा ना साथ साथ नोट्स बनाने चाहिए इसके। मेरा ख्याल है कि जब ये प्रैक्टिस करवाएगा ना, तो उसके जी अंदर जी। ये हमें ये बार बार कोरिलेट करेगा, तो उस वक्त शायद हम ज़्यादा बेहतर समझने की पोजीशन में होंगे कि किस किस चीज़ को रेफर करना है। अच्छा ये नोट्स, अदरवाइज इसकी पीडीएफ मौजूद है, तो पीडीएफ भी हम रख सकते हैं। अच्छा ये नोट्स हैं ये वाले, एक मिनट नहीं, ये नोट्स तो वो हैं कि जिसको आपने क्लिप कर सकते हैं ना इसको। अच्छा इसकी ये नीचे एक पीडीएफ जगह है वगैरह, सेव नोट, ये सेव नोट स्लाइड वाली जो जगह पीडीएफ, है ना, तो हाँ, तो नीचे आपकी इसकी स्लाइड मौजूद है ये और स्लाइड्स हैं, मैंने भी चलो शेयर ये की हम हुई है। फिर तो जबरदस्त है, स्लाइड्स हैं ना, तो हम स्लाइड्स की तरफ रेफर कर सकते हैं ना। Exactly. सही है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, जितना भी हो जाए। मेरे ख्याल है कल हमने कहाँ छोड़ा था, हाँ यही कर रहे थे S अपनी to बात मेरे ख्याल 0.5 and Q to में। तो ये 0.2. हमने कर लिया था। This will preserve some information about values distribution and can help both linear and tree models. First ones can find this feature useful if value frequency is correlated with target value, while the second ones can have less number of splits because of the same reason. There is another important moment about frequency encoding. If we have multiple categories with the same frequency, they won't be distinguishable in this new feature. We might apply a rank operation here in order to deal with such ties. It is possible to do like this. There are other ways to do label encoding, and I definitely encourage you to be creative in constructing them. Okay, we just discussed label encoding, frequency encoding, and why this works fine for tree-based methods. But we also have seen that linear models can struggle with label-encoded features. The way to adapt categorical features to non-tree-based models is also quite straightforward. We need to make new column for each unique value in a feature and put one in appropriate place. Everything else will be zeros. This method is called one-hot encoding. Let's see how it works on this quick example. So here, for each unique value of p-class feature, we just created a new column. As I said, this works well for linear methods, KNN or neural networks. Furthermore, one-hot encoded feature is already scaled because minimum of this feature is 0 and maximum is 1. Note that if you have a few important numeric features and hundreds of binary features produced by one-hot encoding, it could become difficult for tree methods to use first ones efficiently. More precisely, tree methods will slow down, not always improving their results. Also, it's easy to imply that if categorical feature has too many unique values, we will add too many new columns with few non-zero values. To store this new array efficiently, we must know about sparse matrices. In the nutshell, instead of allocating space in RAM for every element of an array, we can store only non-zero elements, and thus save a lot of memory. Going with sparse matrices makes sense if number of non-zero values is far less than a half of all values. Sparse matrices are often useful when we work with categorical features or text data. Most of the popular libraries can work with these sparse matrices directly, namely XGBoost, LightGBM, Sklearn, and others. After figuring out how to pre-process categorical features for tree-based and non-tree-based models, we can take a quick look at feature generation. One of most useful examples of feature generation is feature interaction between several categorical features. This is usually useful for non-tree-based models, namely linear model and KNN. For example, let's hypothesize
The target depends on both P-class feature and sex feature. If this is true, linear model could adjust its predictions for every possible combination of these two features and get a better result. How can we make this happen? Let's add this interaction by simply concatenating strings from both columns and one-hot encoding it. Now linear model can find optimal coefficient for every interaction and improve. Simple and effective. More on feature interactions will come in following weeks, especially in advanced features topic. Now let's summarize this video. First, ordinal is a special case of categorical feature, but with values sorted in some meaningful order. Second, label encoding basically replaces unique values of categorical features with numbers. Third, frequency encoding in its turn maps unique values to their frequencies. Fourth, label encoding and frequency encoding are often used for tree-based methods. Fifth, one-hot encoding is often used for non-tree-based methods. And finally, applying one-hot encoding to combinations of categorical features allows non-tree-based models to take into consideration interactions between features and improve. Fine, we just sorted out feature pre-processing for categorical features and took a quick look on feature generation. Now you will be able to apply these concepts in your next competition and get better results. अच्छा भगत भाई, हेलो। जी 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 जी। हाँ, आपका जो मशवरा है ना कि इसको कहीं राइट डाउन किया जाए, सही है। वैसे कुछ ऐसी बातें वो कर जाता है जो ना प्रेजेंटेशन में किसी जगह पे नहीं है, ये बोल रहा है बस उसको। स्पार्स अभी उसने बताया ना, स्पार्स मैट्रिक्स की बात की ना उसने। Exactly. अब स्पार्स मैट्रिक्स की बात जब की उसने यहाँ पे कहीं नहीं लिखी हुई थी ना स्लाइड्स में, ठीक है, और ना ही उसने जो बात की स्पार्स मैट्रिक्स की वो उसने जो है ना स्लाइड में लिखी है और ना ही समरी में बताया, ठीक है। तो उसने बात की थी तो या स्पार्स तो मैट्रिक्स कोई की, वॉलंटियर जहाँ पे ना करे और इसकी। हाँ, हाँ, जी जी, उसने कहा था कि जहाँ पे ना आपके जो कैटेगरीज जो है ना वो बहुत ज्यादा है ना, जो जिसमें के उसकी रेशो, अगर आप जब उसको वन हॉट एनकोड करेंगे तो उसके अंदर क्या है कि उसमें क्या होगा कि आपके पास नॉन जीरो जो हैं वो मतलब कम होंगे, ठीक है, नॉन जीरो कम होंगे लेकिन जीरो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जीरो ज्यादा होंगे। जीरो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि आपके पास फीचर बहुत ज्यादा हैं जिसमें आप वन वन हॉट इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या होगा कि जीरो ज्यादा हो जाएंगे, वंस कम होंगे। मेमोरी तो बहुत। ठीक है, तो उस केस के अंदर वो कहता था कि स्पार्स मैट्रिक्स यूज करेंगे, कुछ इस तरह कुछ कह रहा था वो, फिर मैं उसको तकरीबन कंप्लीटली नहीं फॉलो कर पाया। तो वो जो है ना इसमें मैं इसलिए आपको कह रहा था कि हम ना एक ना इसके थोड़े बहुत ना नोट्स लिखें साथ साथ, क्योंकि ये कोर्स ना बड़ा ही ना एक तो फोकस्ड है इसके ऊपर कैगल के कंपटीशन के लिए, और मतलब बहुत ज्यादा नहीं डाइवर्स नहीं होगा कोर्स। तो इसको अगर हम लिखते रहे ना साथ साथ तो यूं समझेंगे वो फिर इतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो और वीडियो भी मेरा अगर मुश्किल 10-12 मिनट की होती है, अगर अपने ऑफ टाइम पे भी कोई बंदा जो है वो उसको की पॉइंट्स नोट करता रहे और बाद में उसको शेयर कर दे, दैट इज आल्सो पॉसिबल। हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा जी, इंशाल्लाह। तो अब हमारे पास टाइम इसका तकरीबन खत्म होने वाला है, 2 मिनट रह गए हैं। तो अगर नई वीडियो शुरू करें तो वो खत्म नहीं कर पाएंगे। आगे है मेरा डेट ख्याल वो कर टाइम। लें, डेट वाला है ना वो, हमें अभी तक किसी भी उसमें कवर नहीं किया हमने अपने डीप लर्निंग में ना। ये कोई नई चीज है जो हमारे लिए होगी। अच्छा इसको सही शुरू है, कर सही, दें। हाँ, डेट वाली ना ठीक है। ऊपर है। और ये क्या है, ये भी ऊपर ऊपर वीडियो है, ऊपर। फीचर एक्सट्रैक्शन है। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक भी यानी कि काफी टाइम दे गया। चलें इसको शुरू कर देते हैं, लेकिन और टाइम कम है। बस वो फ्लेवर मिल जाए थोड़ा सा। सही है।
और सर आपको किसी को पता है कि रिजल्ट जी सर, चलें सर, थैंक यू। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।